DILR एक ऐसा सेक्शन है कि या तो आपको बहुत दिक्कत देगा या फिर अगर करते जाओगे तो करते चले जाओगे। बड़ी सीधी सी बात है एंड ये हर साल पिछले 4-5 साल की तो कहानी यही है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, बड़े सिंपल उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो ये है कि भाई कैन आई गिव यू 3 टिप्स, फंडामेंटल टिप्स, एसेंशियल टिप्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनस्किपेबल टिप्स विच एवरीबडी नीड्स, whether you are somebody who's very poor in DILR or you are exceptional in DILR, all of you need these tips so that you can refresh your mindset कि अच्छा this is the mindset with which I need to move ahead with DILR. The problem is that in all of my one-to-one calls, and I've said this in my last video as well, that now I've started to see a pattern, this is a pattern of problems which the students have, and over the last 5-6 years this is what I've solved also. So how about I condense that into 3 tips and present it to you. My dear friends, if you don't know me yet, I am Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher. I am the founder of Creatum and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. Why this video is important is because, my dear friends, in DILR it is actually, the mindset is a very simple mindset, but it's all about how you execute it, how well you practice it. Without further ado, let me take you to my tip number 3, which is a mindset changing tip. If you don't know this, you learn this. If you knew this, this will refresh your thought and will help you understand कि क्या करना है. देखो सीधी सी बात है, ये पॉइंट उनके लिए है जो कि अभी शुरू कर रहे हैं predominantly. That if you're starting off, suppose you're saying that okay, I'm very weak and I think I need to restart my DILR prep or I need to improve it. I have one very simple advice. Please cover the breadth of the syllabus of DILR early. Which means what? Which means that भाई देखो सीधी सी चीज है, how would you focus first on breadth? Simple सी चीज है that take a book of DILR which has only the previous year CAT DILR questions segmented by topic. What you will realize from that book is that there are predominantly 10 to 12 kinds of DILR sets which come in CAT. I will give you those 10 to 12 kinds in the description also. You can see that. तो जब आप ऐसी कोई भी किताब उठाएंगे जहां पे उन्होंने पिछले साल के कैट के सवालों को सेगमेंट करा है, आपको समझ आ जाएगा DILR के सेट्स प्रेडोमिनेटली 10 से 12 किस्म के होते हैं. विच मीन्स व्हाट, आपको जल्दी से पहले करना ये है, आप हर टाइप के एटलीस्ट 10 सेट सॉल्व कर लें, ओवरऑल 100 सेट सॉल्व करके बैठ जाएं. ये आपको टारगेट करना है अगले 2 हफ्ते के अंदर वाइंड अप करने का, अगर आप DILR में वीक हैं और बाकी सब सॉर्ट हो चुका है. और अगर बाकी सब सॉर्ट नहीं भी हुआ है और DILR में वीक है, ये तो करना ही करना है. आई हैव हैड अ सिमिलर एडवाइस फॉर QA. इफ यू वॉच दैट वीडियो विच यू शुड, बिकॉज यूजुअली जिनका DILR में होता है इशू, उनका QA में भी इशू है, तो वहां पे भी है, वो भी जाओ और देख लो, ये कर लो भाई. सीधी सी चीज है. अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सी बात है. बिकॉज वंस यू कवर्ड द ब्रेथ, then what is happening is that subconsciously you have seen all kinds of set in front of your eyes. आपने हर किस्म के सेट देख लिए हैं, उनमें से कुछ सेट्स आपने सॉल्व कर लिए होंगे, कुछ अगर सॉल्व नहीं कर पाए होगे तो सोल्यूशन में जाके आपने समझा होगा, इंटरनलाइज करा होगा कि ऐसे सॉल्व होता है, वो कर लो. दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस. नो सेट विल लुक न्यू और इट वुड अपीयर न्यू. माय डियर फ्रेंड्स, दिस टिप नंबर 1, I would repeat, is about increasing your familiarity. Because why? What is the problem? A lot of times students come to me in my one-to-one consultations or on my free Telegram group that sir, at times I don't know how to approach it, or even if I know how to approach it, वो इतना complex हो जाता है कि समझ नहीं आता है. See an expert solve it, which you can only see when you are seeing the solutions of previous year questions. The tip number 1 was about familiarity. Now the tip number 2, my dear friends, is the mindset changing tip which I was speaking to you about, which is that, my dear friends, DILR is entirely a set selection game. इसमें आपने नई बात क्या बोल दी सर? क्या बन रहे हो आप? हीरो बन रहे हो कि अच्छा बड़ी मैं माइंडसेट चेंजिंग बात कर दी. DILR इज अ सेट सिलेक्शन गेम. तो सबको पता है कि सेट सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, सबको पता है, बट क्या आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे. बहुत लोगों को पता भी नहीं है शायद. इन द VRC वीडियो आई हैड सेड दैट VRC इज अबाउट अटेम्प्ट. VRC इज एन अटेम्प्ट गेम. द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस you attempt, the more you win. DILR is opposite to that. Also, the same thing applies to QA, that you need to be selective, which means what, my dear friends, you need to be clear that my entire strategy and success in DILR depends on how quickly I am able to identify which sets I can solve. How will you get that understanding? You will get that understanding only if you have attempted enough number of mock tests so that you know कि हाँ इस किस्म का सवाल मेरे से नहीं बनता है जल्दी, ये मैं कर पाऊंगा, ये मेरी औकात में दिख रहा है मुझे कि हो जाएगा, वो वहीं से आएगा. That's that. Which means what, that
that, my dear friends, what you need to do simply is that you need to aim to solve 3 sets in 40 minutes. That should be your aim, because it is very rare. It is very rare to complete the 4th set. बहुत rare है. If you are exceptional, then you can. Which means that when you're checking that which sets I can do, you need to reach that point. See, how can you check that you are preparing well in DILR? Your preparation check एक तो ये कि हाँ यार मॉक में अगर अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो सही है. एक और भी है टेस्ट. It is a very input oriented this thing test, that अगर जब एक DILR सेक्शन के 4-5 सेट जो भी देखते हो आप, if you can very conclusively say that yes, these 2 sets I can do, these are my must do sets. If you are able to confidently assume 2 sets to be must do sets and 1 set to be a can do set, then my dear friends, you have won this. तुम 3 सेट करके निकल सकते हो. DILR would be sorted. That's that. अब कुछ केसेस ये होंगे that in DILR the section is so complex in some things that you'd be like कि सर एक सेट तो फुल बन भी नहीं रहा है. Then that is an advanced level strategy which I don't usually share here. Then कि फिर भाई okay, if you can't do all 4 questions of one set, can you do at least 2 here and then go and see that जो और वाला सेट है उसमें क्या कोई 2 सवाल या कोई 3 सवाल सही है which you can solve. Even then that is a strategy. At times when I help students in how to analyze a mock and I see that यार ये section मुश्किल था इस बार, इसमें you had to break your mindset of seeing a DILR set as a set and you were supposed to see them as individual questions कि यार यहाँ से ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, यहाँ से ये. वो भी circumstances कभी कभी क्रिएट होते हैं, हर बार नहीं. I've just shared it so that you know it. Moving on to the tip number 3, which is again that, my dear friends, now that you know these things, how do you practice this? It's a very clear thing that अब अगर मुझे समझ आ गया है कि मेरा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है, मुझे मतलब कि मुझे अपने रियल कैट एग्जाम सिमुलेट करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से एक ऐसी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं 3 सेट 30 से 40 मिनट कर सकता हूँ. ये मैंने 30 से 40 मिनट की रेंज क्यों दी है भाई? अगर इफ यू आर अ बिगिनर, एम फॉर 40 minutes. If you are becoming an expert at it, get closer to 30-minute mark so that you have 10 minutes more to do something more crazy. Even the difficult ones, at least कुछ एक आध सवाल भी निकाल लोगे, स्कोर कितना बढ़ जाएगा, परसेंटाइल कितना बढ़ जाएगा. That's crazy. Eventually you reach a point wherein can you solve 3 sets in 30 minutes or not. But don't be harsh on yourself, because that is what your aim is, which means all that you have to get to the habit of doing one set in 10 to 12 minutes. That is what your entire strategy is. That is how you will build your stamina. That is how you need to set goals. See again यार देखो, मैंने VRC के वीडियो में भी कहा था कि अगर तुम्हें टाइम क्लैरिटी नहीं है, तुमने ऐसे गोल्स डिवाइड नहीं करे कि इतना समय इस पे है, तो फिर कैसे प्रेप कर रहे हो? दिस इज द सीक्रेट ऑफ द टॉपर्स. दे नो देयर टाइम लिमिट्स, दैट हाउ मच आई कैन स्पेंड, एंड इफ दे कैन सी दैट ये ज्यादा होगा, वो छोड़ के आगे मूव ऑन कर जाते हैं, और दे प्रैक्टिस लाइक दैट. माय डियर फ्रेंड्स, these were the 3 tips. These were the 3 very important conclusive tips. If you like the video, do not forget to like it physically, subscribe to the channel, because my dear friends, this is, I'm going to share with you a lot of insights about CAT. I'm moving on to my bonus tip, but before that, I have to say this one thing to you, because it is about time you know this, otherwise it will be late. I have a pre-MBA program called How to Be School. You would know about it already, because a lot of students know about it already. Why is that important right now? Because it has a course in it called MBA Specialization Selector. What is important? What is so important about that? My dear friends, अभी जब तुम इंटरव्यूज में जाओगे, MBA एडमिशन इंटरव्यूज, अगर सीरियस हो वाकई, वहाँ पे एक सवाल होता है why MBA, या फिर what do you intend to do after MBA. यूजुअली होता है, किसी ना किसी फॉर्म में होता है. If you don't know what you intend to do, what field you intend to be into, be it finance, marketing, sales, operations, what, how will you start to do things from right now which will prove them that yes, he's genuinely interested when he says that I want to get into this field, he or she. Winners start early. There is also a course in that called MBA Concept Crashers, in which I will teach you the first year concepts in very short snippets, but predominantly How to Be School. The course will give you a visualization into what happens in MBA, your ACADS, extra curricular activities, placements, romantic relationships, all of those things. I've spoken about a lot of things in that course, so just check that out, because that is something which you need to start off, in my opinion. Now, a bonus tip is what you would have seen in my quant video and VARC video as well. You have to maintain a logbook. A lot of educators say that you have to maintain a formula book. I go one step ahead. That is important. This is even more important, because this is for your subconscious. You need to log in every practice session of yours. If you're sitting for the next 2 hours to study, you need to start the session by writing somewhere, okay, in the next 2 hours I intend to solve these many questions of this and this and that, and then once that 2 hours is done, come back and tick mark that.
दैट इज व्हेन यू विल बी डूइंग इंटेंशनल स्टडीज। वरना कई दफा ये हो जाता है कि हमने लैपटॉप खोल लिया है, बैठे हुए हैं और बस बैठे हुए हैं, और फिर लगता है 2 घंटे बैठे भी थे पर पढ़ाई हुई यार, हुई नहीं। वो इसलिए होती है बिकॉज देन वी जस्ट गेट लॉस्ट इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एंड सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, और you're seeing this video, I don't know. That's that. Note the type of sets in which you found it difficult. What was the type, what was the area? Extremely important, because then probably you'll be able to uncover patterns in that. That is extremely important. And then revise the difficult sets. ऐसा नहीं है कि जो मैंने 100 सेट वाला तुम्हें दिया था कि एक बार 100 सेट हो गए, तुम वो सिर्फ 100 सेट करके ही अपना कैट एस कर सकते हो, बिकॉज उसमें से 100% 50 सेट तुमसे पहले अटेम्प्ट में हुए ही नहीं होंगे। वो 50 सेट जो तुमने सोल्यूशन देख के करे हैं उनको भैया हर हफ्ते जाके दोबारा सॉल्व करो। वो 100 सेट को अपने दिमाग में बिठा लो 10 बार प्रैक्टिस कर लो बेशक उसको। प्लीज गेट अहेड ऑफ पीपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।